Good morning, you're watching NewsX and I'm Medha Sharan. As we wake up on Sunday, the city is once again battling a severe air quality crisis. The overall air quality index has spiked to a hazardous 400, placing Delhi firmly in the severe category. Currently, data reveals alarming PM 2.5 levels at 228, far exceeding safe limits, while PM 10 sits at 150. Other pollutants like NO2 at 25, SO2 at 3, O3 at 5, and CO at 4 add to the toxic mix, posing significant health risks, specifically for children, the elderly, and those with respiratory issues. Though the Diwali and festive season has subsided, the relief is short-lived. The wedding season is now in full swing, bringing with it a fresh wave of firecracker use, a major contributor to the smog blanketing the capital. Experts warn that this could worsen the AQI further, with stubble burning in neighboring states and vehicular emissions compounding the problem. The Delhi Pollution Control Committee has issued a health advisory urging residents to limit outdoor activities, use masks, and avoid cracker bursts. Authorities are on high alert, monitoring the situation closely. I am joined by my colleagues Brian Thomas from Vijay Chowk in Delhi, Anil Chaudhary from Ghaziabad, and Anil Khan from Noida. Brian, let me go across to you first. What is the AQI like from where you are reporting? Well, right now we are at Vijay Chowk, and here the air quality continues to be mounted in a significant number. Right now also when we talk about the AQI, it is above 300, and when you get an understanding, you can get a perspective of the fact that it looks very gloomy here. And this is the Rashtrapati Bhavan that we are showing you. On the right hand side is the old parliament, and adjacent to that is the new parliament itself. Now when you see these visuals, ahead is the very famous India Gate, the very iconic India Gate, which is clearly not visible because of the dense smog that is rather engulfing the national capital, and this is continuing to do so. And as a result of that, people are facing major problems. Now visibility is also becoming a challenge, because when even if I request my camera person Ankush to just zoom out and show you the fact that it looks very it's not visible. It is not visible. The India Gate is not visible, and it looks like a thick blanket of smog is rather coming down to the surface level, and people are having a lot of problems. Now the hospitals are also seeing a major surge in breathing issues, asthmatic patients, pregnant women are facing the major wrath of it, and advisories have also been given by experts to ensure that people should be wearing masks at this point of time. Unless it is very necessary, one should not go out. Not only that, the Delhi government are also ramping up their efforts to ensure they can curb the air pollution. Even the Manjinder Singh Sirsa, who is the environment minister, has been visiting hotspots, identifying hotspots like Anand Vihar, deploying anti-smog guns and all of that, so that situation can be better. Even Wazirpur is one such hotspot where the air quality goes above 400. Even now it has been recorded that the air quality at Wazirpur is above 400. Now where we are also, which is the Vijay Gate, which is regarded as a very posh area because of the fact that vehicular movement is very limited. Until as it is a VIP vehicles, it is not allowed, but still the air quality here also remains above 300. So that is one alarming category, one alarming situation that the people in national capital are battling with at this point of time. Yes. All right, let me also go across to my colleague Anil. What is the AQI like from where you are reporting? देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद का जो NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क पर मौजूद। AQI की अगर बात की जाए तो 350 के पास AQI गाजियाबाद का बना हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा इसको माना जाता है। ऐसे में तस्वीरें भी दिखाते हैं आखिरकार किस तरह की तस्वीरें आज दिख रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से धुंध की जो चादर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं इन पर भी आप देखेंगे सफेद चादर जो है वो ढकी हुई दिखाई देगी। यही वो खतरनाक चादर है जो पोल्यूशन की, जो बेहद परेशान लोगों को और साथ ही अब बीमार भी कर रही है। लोग बेहद परेशान हैं, लोग चाहते हैं कैसे भी पोल्यूशन से कुछ तो राहत मिल पाए और कैसे भी कोई सॉल्यूशन सरकार की तरफ से या गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कुछ निकाला जाए। हालांकि
ग्रैप 2 के जो नियम हैं पहले से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लागू हैं और जरूरत है उस और विशेष ध्यान देने की और एक सख्त एक्शन लेने की। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से बीते 2 दिन के अंदर बेहद गंभीर श्रेणी में AQI बना हुआ था, इसको देखते हुए फिलहाल जो है BS3 के जो वाहन हैं उनको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। दिल्ली में एंट्री नहीं है, जिसके चलते अब टीम गठित कर दी गई है गाजियाबाद में और जो सभी जितने भी बॉर्डर्स हैं गाजियाबाद के उन पर तैनात कर दी गई हैं। वो उनका सिर्फ यही काम रहेगा, जो भी BS3 के वाहन हैं उनको रोकना और उन पर चालानी कार्रवाई करना और सीज करने का काम अब गाजियाबाद पुलिस अब लगातार करती हुई नजर आ रही है। वहीं कंस्ट्रक्शन को लेकर भी अब एडवाइजरी जारी की गई है। यदि कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रहा है तो वहां पर ग्रीन जाल लगाना और ग्रीन कपड़ा लगाना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, जिसको लेकर कई अब सख्त जो है निर्देश अब दे दिए गए हैं। हालांकि ग्रैप 2 के जो नियम है काफी दिन पहले ही लागू कर दिए गए थे, पर अब एक बार फिर जिस तरीके से स्थिति खराब हुई है उसको देखते हुए अब एक बार फिर जो है एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बताया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हर उस वाहन को चेकिंग किया जा रहा है जो ग्रैप 2 के नियम के विरुद्ध चल रहा है, तो उन वाहनों को चेक किया जा रहा है, उनको उनकी चालानी कार्रवाई और सीज करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ऐसी इकाइयों को, ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर लिया गया है जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं और नियम के विरुद्ध हैं। उनके खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार किया गया, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। अब डे पर डे लगातार उन पर छापेमारी की जाएगी और उनको सीज करने का काम जो है अब किया जाएगा। इस तरीके की बातें अधिकारियों की तरफ से कह दी गई है। सख्त निर्देश हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर तमाम जो सड़कें हैं सड़कों पर भी छिड़काव करने की बात कही है। लगातार अब छिड़काव होता रहेगा, इस तरह की बातें कह दी गई हैं। फिलहाल छिड़काव तो मुझे नहीं दिखा, पर कई एक्शन जरूर देखने को मिले हैं, जैसे कि गाड़ियों को रोकने का और चेकिंग करने का जो अभियान है वो लगातार अब चल रहा है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको भी अब लगातार जांचा जा रहा है और सील करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसी फैक्ट्रियों को भी सील किया जा रहा है। तो ये तमाम एक्शन प्लान है अब तैयार हो चुका है और जमीनी स्तर पर दिखेगा तो उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर आम जनता को देखने को मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरीके से खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है, लोग बीमार अब होने लगे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ तो राहत मिले, या तो बारिश हो जाए। बारिश की भी आस लगा के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है आगामी 2 से 3 दिन के अंदर बारिश हो सकती है। इस तरीके का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। तो इसी को लेकर लोगों को इंतजार है, बारिश हो, थोड़ी सी राहत बारिश के चलते ही शायद पोल्यूशन से मिल जाए। फिलहाल तमाम स्थिति इस तरीके की बनी हुई है, बेहद गंभीर श्रेणी में हम लोग पहुंचे हुए हैं और इसी को देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अब अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं और जो किसी बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं और जो बच्चे हैं उन सभी को विशेष कर अपना ध्यान रखना है। इस तरीके की हिदायत गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा मास्क लगाकर जरूर रहें। ये तरीके की हिदायत साफ तौर पर दे दी गई है गाजियाबाद जी। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू माय कॉलीग अली खान हु इज इन नोएडा। व्हाट इज द AQI लाइक फ्रॉम वेयर यू आर रिपोर्टिंग करंटली? मेरा नोएडा की AQI की बात करें तो जिस समय मैं इस समय सेक्टर 125 में मौजूद हूं, यहाँ का AQI करीबन 370 के आसपास दर्ज किया गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों की अगर AQI की बात करें तो 2 दिन पहले का जो नोएडा का AQI था करीबन 170 के आसपास था, क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। तो नोएडा का AQI 170 जो मॉडरेट कैटेगरी में आ गया था, पर लगातार कल से और आज की स्थिति की बात करें तो भयंकर स्थिति में आ गया। 370 का AQI अभी नोएडा सेक्टर 125 का है। नोएडा का एवरेज AQI की बात करें तो 360 के आसपास दर्ज किया गया है। सुबह सुबह का वक्त है, आज संडे का दिन है तो माइट भी ट्रैफिक कम रहेगा, पर लगातार AQI बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन की स्थिति भी काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम उपाय वही नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तमाम उपाय कर रही है, पर
फिर भी कहीं ना कहीं ये उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं उस AQI को मैनेज करने के लिए। जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा है। All right, let me bring in my colleague Brian Thomas into this conversation back. Brian, the Delhi government had also talked about cloud seeding, which apparently resulted in no such results as such. What do you think the government will do going forward in regards to the poor air quality? If we talk about the cloud seeding, it did not clearly work because the cloud needs, or the process needs, a certain kind of a moisture which was not present at that point of time. Now clearly, if we talk about Delhi government, yes, they are ramping up their efforts to ensure they can curb the pollution, but the task remains very difficult for them because Delhi has always been a victim of air pollution in these peak seasons, where at this point of time, when you were also saying the fact, speaking the fact that during these wedding seasons, firecrackers are being burnt, and that is also one of the major contributors for pollution itself. And we've been talking to the doctors also. They've been also issuing advisories, and Delhi government have been identifying hotspots. They are visiting those hotspots. They're visiting those places which are high in pollution, which places that are contributing heavy in pollution numbers, and they are deploying your anti-smog guns. They are deploying water sprinklers. But again, there needs to be a faster and a quicker approach towards curbing the pollution, because this is going on for ages now. This is not the first time we are witnessing, this is not the first time we are speaking about it. It's a recurring topic that goes on, that gets the maximum of the limelight at this point of time, when that is the peak season, when the Delhiites faces the maximum wrath of it. Yes. All right, with that, I would like to thank all my colleagues Brian, Anil and Ali for joining us on this broadcast. Moving ahead now, gold prices in New Delhi are showing their usual dynamic shifts, influenced by a mix of global economic cues, festive afterglow and the bustling wedding season demand. With Diwali festivities behind us, the focus now turns to matrimonial celebrations, often